Hello and welcome to CEN News. As we all know, GDP growth rate is an important indicator of the economic performance of the country. So here is with me Dr. Rashid Choudhary. He will share his perspective regarding the degrowth of the GDP. Hello and welcome, sir. Welcome. Thank you for giving me this opportunity to share my views. You begin with a sentence that GDP is an important indicator of the growth of our nation. Yes, certainly across the world, this is the most important criteria, which is taken into account by the World Bank, by the EFMI, by all the leading financial institutes, and of course, when it comes to the funding, the Asian Development Bank, the Asian Bank, all the institutes take this into account. As far the situation is concerned, I'm sorry to say this is the worst ever economic crisis India is facing since independence. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh said in 2014 that Prime Minister Modi would be a disaster for the country as the Prime Minister. So his prediction came true, and what we are seeing is a chaos, mess, and totally economic disaster. The level of this economic disaster you can see is that even the finance minister of this country says that this is an act of God. But I'm sorry to say this is not an act of God. This is an act of ill policies of the BJP government led by Shri Narendra Modi ji. This is going to cost us heavily. What we are facing in the country is the worst economic meltdown ever, and worst among all the nations of the world. I'm saying this on record, among G20 countries and as well as among 171 nations, indexed by the World Economic Forum. We are the worst performer. India is the worst performer as an economy. So what happened in 2008 when the whole world was under a recession, economic recession? Even during that time, Prime Minister Manmohan Singh and his able team saved us from any economic crisis kind of situation. So, the primary factor which is responsible for this is this current situation, current economic mess is none but Prime Minister Narendra Modi ji. His way of working is not good for the country. His dictatorial kind of tendencies are not good. He does not listen to anyone. He just keep on dictating, and he wants to run this country as a private limited company. I have one simple question. In this country where our economy is minus 23% down. In the same country, there is a businessman, his friend, Mukesh Ambani, whose net worth and economy is 35% up. So who is this possible? Another friend of Mr. Modi, that is Mr. Adani, his economy, his total net worth is up by 30%. So what is happening? All the big capitalist cronies, they are taking money from the government, from the private sector, from the social sector, everywhere. And there is a loot and plunder going on in this country that is unchecked. And the current finance minister, she is good for nothing. So, what do you think that if your government would have been in the power, what kind of policy your government would have been made? Like, economic country would have been stable if your government would have been in the power right now? Our economy, the Congress Party's perspective of economy is an inclusive kind of economy. That includes mainly about spending. That does not focus on lending. What we focus is, these guys want to lend and want to borrow money. That's not going to solve the purpose. What is required is you have to send the money down to the consumer, down end people, the poor people. Like our government introduced Manrega. Manrega is the most successful program for the poor people. And this government, what Modi ji told in the Lok Sabha, that Manrega is a bad program and this is the proof of the failure of the UPA 1 and UPA 2. So I'll not this amendment. But later on, Mr. Modi has to adopt Manrega, and Manrega is the only program through which they are able to send some funds to the ground. So these kind of
policies Congress aims for, and Rahul Gandhi's program, Rahul ji proposed a NAE program. That is the basic minimum guarantee for everyone in this country, and that will boost the this economy, that can give the stimulus, right kind of stimulus to this economy. And not only this, our whole creation was our whole creation and focus was about the job creation in this country. We are a young nation, we are people of young nation. We are a nation of young people, so we require jobs. Where are the jobs? 2 crore jobs have been lost. 20 million jobs have been lost in this country under the nose of Shri Narendra Modi ji. So a lot of there has to be a holistic approach for the economy. What the current regime is doing is just providing stimulus to the big wigs, to the big crony capitalists and industrialists. That's it, nothing more, nothing less. And poor people are suffering. You talk of the unemployment, highest. Yeah, exactly. You talk of the economic situation, worst. You talk of the farming sector, worst. Agriculture, worst. Production, worst. Manufacturing, worst. Everything is at the lowest. So this is unfortunate. सर इस टाइम पे आत्मनिर्भर भारत जो हमारा है, मोदी जी इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है, विल इट बी सक्सेसफुल? देखिए, ये सक्सेसफुल हो सकता है जब नीयत में, करनी और कथनी में फ़र्क ना हो. ये करनी और कथनी में फ़र्क है. मोदी जी ने अभी पिछले दिनों एक मोर के साथ, पीकॉक के साथ अपनी वीडियो दी. मोदी जी का उसमें ट्राउज़र देखिए, उसमें टी शर्ट देखिए, उसमें मुफलर देखिए, बैठने का ढंग देखिए, मोदी जी के ड्रेसेस देखिए, गॉगल्स देखिए, उनकी BMW देखिए. ये करोड़ों रुपए की चीज़ें मोदी जी कहाँ से लाते हैं? सारी चीज़ें खुद तो वो विदेश की यूज़ करते हैं और गरीब लोगों को कहते हैं भैया तुम आत्मनिर्भर बन जाओ और तुम्हारे से आत्मनिर्भर. ये इमोशनल हत्याचार है, इमोशनल ब्लैकमेल है. ये इसमें करनी और कथनी में फ़र्क है. ये सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है कि हम भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं. और दूसरी बात, ये खुला झूठ है. कोई भी देश आज की डेट में खुद से सारा कुछ नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो मर जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा. क्यों? कि दुनिया के साथ मिलजुल के चलने से ही कॉमर्स, ट्रेड चलता है. इकोनॉमी तो तभी प्रॉस्पर करेगी जब आप अपने ही कुएं में रहना चाहेंगे तो फिर कुएं में स्मेल आने लगती है, कुएं में बदबू आ जाती है. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई देश पूरा 100% निर्भर हो सके. बहरहाल मेक इन इंडिया अ बिग झूठ, स्किल इंडिया बिग झूठ, डिजिटल इंडिया बिग झूठ. एंड नो दिस आत्मनिर्भर, ये तो खुला षड्यंत्र है जो आम भक्तों के साथ, जो मोदी जी के भक्त हैं ना, उनको खुश करने के लिए ये भाषण दिया हुआ है. आत्मनिर्भर भाई, किस चीज़ की आत्मनिर्भरता आपको चाहिए? आज से पहले क्या कुछ था ही नहीं भारत में? जो रिक्वायर्ड चीज़ें हम बना रहे हैं, हम बनाएंगे और बनानी चाहिए. हमको अपना ट्रेड जो है वो बढ़ाना चाहिए, लोगों को बना के यहाँ से देना चाहिए. बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये इसके लिए पॉलिसी सरकार के पास क्या है. सरकार बैंक्स को एक तरफ से कह रही है लोन दे दो जी, लोन दे दो, एंटरप्रेन्योर्स को ये दे दो. मुझे एक एंटरप्रेन्योर्स अभी तक कोई देखना है जो कि कोलेटरल फ्री इस तरह से जो कहा है एक्चुअल में सरकार में उसके अंडर आता हो. नहीं आ रही चीज़ें, ग्राउंड पे हो नहीं रही हैं. और प्रॉब्लम इज दिस गवर्नमेंट इज, ये तो पहले सोचते ही नहीं और फिर कर देते हैं, और करने के बाद फिर इनको ख्याल आता किया क्या है, और फिर उस पर भी झूठ बोलते हैं, खुला झूठ बोलते हैं. सो ये पूरे का पूरा फस है, एक जोक है. सर इस टाइम पे आपने देखा होगा जो मोदी जी ने, जो चाइना की जो कुछ ऐप्स है लाइक टिकटॉक है और पबजी है, लास्ट टाइम पे रिसेंटली पबजी जो है वो बैन हो गया है. आपको क्या लगता है चाइना की जो इकोनॉमी है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से? देखिए, ये अच्छी बात है कि चाइना के अगेंस्ट स्टेप लिए जा रहे हैं, बट ये सफाइस नहीं है. एक तरफ टिकटॉक बैन हो रहा है, दूसरी तरफ टिकटॉक प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में पीएम फंड में, जिसका पता ही नहीं कितने करोड़ रुपया दे रहा है, आपको पता है सारा. वो पेटीएम चाइनीज कंपनी, बैक्ड बाई चाइनीज कंपनी है, चाइना का स्टेक है, वो कितने करोड़ रुपया दे रहा है. हर एक चाइनीज कंपनी जो है प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और दूसरी साइड से उनको जनता को दिखाने के लिए सब ड्रामा रचा जा रहा है. इसमें कोई ज्यादा वेट नहीं, और इससे एज फार द चाइनीज इकोनॉमी इज कंसर्न हार्डली केयर्स. ये इसलिए बैन किया गया है जो टिकटॉक है क्योंकि अब मुकेश अंबानी जी इसको खरीदने वाले हैं. 5 बिलियन की तो डील हो रही है उनकी, और 2 बिलियन पर जाके कुछ मालूम पड़ रहा है मीडिया की खबरों से कि 2 बिलियन पे वो स्ट्राइक होने वाली है. तो इधर से प्रेशर डालो, उधर से दोस्त को डलवा लो. आपने देखा मुंबई एयरपोर्ट का मसला जो आया, जो कंपनी मुंबई एयरपोर्ट को चला रही थी वो बेचना नहीं चाहती थी अडानी साहब को. उस कंपनी पे पहले 4 दिन FIR हुई, फिर ईडी ने रेड किया, और फिर उस कंपनी ने हाथ जोड़ के अडानी साहब को मुंबई एयरपोर्ट दे दिया.
तो कैसे ये सब मोदी जी की आसपास के जो भक्त लोग हैं, अमित शाह जी की चाल है कि आपने क्रोनीज को किस तरह से एसेट दिलवाएं। चाइना की इकोनॉमी को इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। चाइना एक बड़े हाथी की तरह दुनिया के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। मैं कहता हूँ कोरोना से भी खतरनाक चाइना इस वक्त जो है वो दुनिया के लिए है। पर हमारे जो लोग हैं ये चाइना के साथ सिर्फ मीडिया चेस्ट थम्बिंग कर रहे हैं, ये सफाइस नहीं करता। सर, इस टाइम पे देखा जाए जो चाइना है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, और जो आपको पता होगी कि गलवान वैली का इंसिडेंट जो हो गया, आपको पता ही होगी उस चीज़ के बारे में। सर, इस टाइम पे जो चाइना की इकोनॉमी है दैट इज़ 13.3 ट्रिलियन, और जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज़ 2.94 ट्रिलियन। सर, आपको क्या लगता है इस इकोनॉमी के सिनेरियो में जो हमारी कंट्री है वो डिफेंस कर पाएगी अगेंस्ट चाइना? देखिए, एज़ फॉर द डिफेंस इज़ कंसर्न, हमारे वीर जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो एक एक सौ के बराबर है, और हम ज़रूर डिफेंस करेंगे और हम ये लड़ाई जीतेंगे। मगर जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की ताल्लुक है और फैक्ट प्रैक्टिकल होने का ताल्लुक है, तो आपने इकोनॉमी का साइज़ बता दिया, आपने डिफेंस का भी साइज़ आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज़, और मुझे लगता है कि जंग हमें सूट नहीं करती, चाइना को भी सूट नहीं करती। बट जिस तरह से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर होना चाहिए चाइना पे, जिस तरह से हैंडल करना था, उसमें ये सरकार विफल रही है। और चिंता की सबसे बड़ी चिंता की बात ये है, सरकार चाइना से नजरें हटाना चाहती है, चुराना चाहती है। और चाइना हमारा 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा अंदर घुस करके, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं कि वो अंदर आके बैठ चुका, हमारा एरिया ले चुका। मोदी जी के भाषण चलते रहे, झूले झूलते रहे, उसी दौरान चाइना सारा एरिया जो है वो ले चुका चाइना का। तो ये अंदर की स्थिति जो हमारी है, छोड़ के हमारे वीर जवानों को, फौजी जवानों को, जो सरकार की स्थिति होनी चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जो सब मिनिस्ट्रीज का रोल होना चाहिए, वो शून्य है। और ये सरकार बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई भी ऐसे कदम में अपने आप को उलझाए या उससे बाहर निकल पाए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस। मैं अफनान, कैमरामैन मनदीप के साथ, कीप वॉचिंग CAN न्यूज़।